to measure the wavelength of light, size and separation between two molecules or atoms, radius of orbit of electrons. Okay, so there is an angstrom. तो angstrom और मीटर में कितना डिफरेंस है? 10⁻10 मीटर. ये याद रखना पड़ेगा बिकॉज दिस इज देयर नेक्स्ट ईयर ऑल्सो. 1 एंगस्ट्रॉम इज ए के ऊपर जो डिग्री दिख रहा है 10⁻10 मीटर. ओके, एंड देयर इज अनदर थिंग कॉल्ड नैनोमीटर. तो मीटर या नैनोमीटर आपको याद रखना पड़ेगा. तो 1 एंगस्ट्रॉम इज 10⁻1 नैनोमीटर और 10⁻10 मीटर. 1 माइक्रोन कितना है? 10,000 एंगस्ट्रॉम. 1 नैनोमीटर इज 10 एंगस्ट्रॉम. Okay, so A is outdated, nanometer is preferred over angstrom. Okay, now there is another thing, how do you measure? तो ये सब आएगा एग्जाम में. Okay, so what is, how do you measure the size of the nucleus? Still smaller unit called Fermi. तो ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि तुम किसको किससे मेजर करते हो. So wavelength of light, interatomic or intermolecular separation are commonly expressed in nanometer. फर्मी क्या है? 10⁻15 पार्ट ऑफ अ मीटर. नाउ दिस हैज कम, ये आया हुआ एग्जाम में, तो ये तुम याद रख सकते हो. द कॉमनली यूज्ड स्मॉलर एंड द बिगर यूनिट इज ऑलरेडी गिवन हियर. ओके, सो यू नीड टू जस्ट रिमेंबर द वैल्यूज. सो यू नीड टू मग अप, देयर इज नो अदर वे. SI यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम. So in International Bureau of Weights and Measures, okay, near Paris, there is a cylindrical piece of a platinum and iridium. Okay, उसका जो मास रहेगा ना, that mass is called as 1 kilogram. अभी मैंने बीच में सुना था कि वो platinum iridium जो भी है ना, that or whatever, it is not only that, there is another weight measurement given, I think Britain में है ये, I don't know where it is. मैंने सुना है कि उसका जो मेटल सरफेस या वॉट एवर मेटल इज देयर ना, वो अभी घटने लग गया है. तो दैट मेजरमेंट इज नॉट प्रॉपर. इफ यू रिमेम्बर, जो मेजरमेंट रहता है ना आपका, जो भाजी वाला यूज करता है 1 kg 5 kg, वो जो रहता है, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट मास. ओके, तो वो मैंने सुना है कि वो घट रहा है अपना. यू कैन इन्वेस्टिगेट, थोड़ा सा स्टडी करो गूगल से. ओके, so mass of 1 liter is 1000 ml of water at 4 degrees Celsius is also taken as 1 kilogram. So 4 degrees Celsius. So we have not studied the chapter anomalous expansion of water. तो एक 4 डिग्री सेल्सियस में ना, उसके बाद थोड़ा सा वियर्ड बिहेव करता है या उसके पहले. तो 1 लीटर ऑफ वाटर इज टेकन एट 4 डिग्री सेल्सियस, उसको हम 1 किलोग्राम कंसिडर करते हैं. तो व्हाट आर द स्मॉलर यूनिट? ग्राम एंड मिलीग्राम. ग्राम कितना है? 1000 part of a kilogram. 1 milligram is 10⁻6 part of a milligram. Multiple units of kilogram, ये आता एग्जाम में. क्विंटल. अभी जैसे like you want to take rice और गेहूं या wheat, so normally you don't take it in kg. So there is quintal, like you know, quintal से बेचते हैं. Like what is 1 quintal? 100 kg. तो 100 kg का वीट का ये करेंगे तो हम बोलेंगे 1 क्विंटल. ओके, तो थोड़ा सा इजी पड़ता है लेने के लिए. व्हाट इज 1000 kg? 1 टन, 1 टन. ओके, 1 टन सोना मतलब 1000 kg सोना वैसा. तो 1000 kg इज 10 क्विंटल. ओके, so you need to remember this. So in rural areas they actually talk about quintal and ton. Okay, now non-metric unit of mass. Now you cannot measure atom size, na? So there is a, like it has been defined in chemistry, the mass of atomic particles such as proton, neutron and electron, they can be measured in a unit called atomic mass unit, AMU. Okay, so what is 1 AMU? It is 1/12 the mass of 1 carbon atom. Okay, so 1 carbon 12 atom. Now कार्बन में कितने आइसोटोप्स होते हैं? There are 3 isotopes, 12, 13, 14. What is 12? 12 is the atomic weight. So atomic weight of carbon is 12. तो मतलब वो पहला आइसोटोप, मतलब फर्स्ट. So it is non-reactive isotope. Basically कुछ होता नहीं है उसमें, मतलब it is not harmful.
बट वो जो 14th आइसोटोप है ना, कार्बन 14, दैट इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन क्लास 10th। ओके, वो अपने बॉडी में भी होता है। So if you remember, I don't know whether you know this, कार्बन डेटिंग सुना है क्या? कार्बन डेटिंग बोलते हैं। so if you want to know कि कोई भी लाइक बोन तुमको मिला है, वो बोन कितना साल पुराना है, तो you measure this carbon 14, so there is a carbon present, so you can measure that carbon कितना बचा है or whatever, there is a method called carbon dating and you can know। so in any body there is carbon 14, but what about the particles? How we measure? We don't take carbon 14, we take carbon 12. So I hope you understood. So 12 is the atomic weight, so it's a non radioactive element, okay, normal carbon। तो एक AMU का मतलब है 1/12 द मास ऑफ वन कार्बन एटम। तो मास ऑफ, मैंने तुमको बोला था ना 6.02, ये रॉन्ग है, दिस इज नॉट 10⁻26, दिस इज 10⁻23। यस यस I'm अन्ना, not able to hear you. किसी को भी सुनाई नहीं दे रहा?